दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। 8,113 वैकेंसीज है। टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर और अलग अलग 5 ऐसे पोस्ट के लिए, जिसके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 13 अक्टूबर 2024। आइए हम डिटेल्स देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसका इनिशियल पे है 35,400 सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रिक्वायर्ड है। एज लिमिट है 18 से 36 साल। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है। वैकेंसी से 1,736। स्टेशन मास्टर, इसके लिए भी पे है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 और वैकेंसीज है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए पे स्केल है 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 और वैकेंसीज है 3,144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए पे स्केल है 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 और वैकेंसीज है 1,507। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पे स्केल है 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है C2 और वैकेंसीज है 732। ऐसे कुल मिला के 8,113 वैकेंसीज है। इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इस प्रकार है। 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो भी एप्लीकेबल है जिस पोस्ट के लिए, उसके अनुसार कंडक्ट किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT shall be done at the rate of 15 times the vacancies. The shortlisting for computer-based aptitude test and typing skill test shall be to the extent of 8 times the vacancies, may increase or decrease as per the requirement of railway administration based on the merit of the candidates in the second stage CBT. फर्स्ट स्टेज CBT है वो 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसमें 3 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। फर्स्ट स्टेज CBT is of screening nature and the standard of the questions of the CBT will be generally in conformity with the educational standards prescribed for the post. Normalized score for first stage CBT shall be used for shortlisting of candidates for second stage CBT as per the merit. सेकेंड स्टेज CBT 90 मिनट का, 120 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क है, हर गलत जवाब के लिए डिडक्ट किया जाएगा। इसमें सेक्शन है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज CBT shall be used for shortlisting the candidates for document verification for the post which do not have typing skill test, computer based aptitude test. For the post having typing skill test, computer based aptitude test, the normalized mark score by the candidate in second stage CBT shall be used for shortlisting the candidates for typing skill test, computer based aptitude test. Computer based aptitude test will be conducted after qualifying the second stage CBT only for candidates who have opted for station master. Qualifying marks, the candidates need to secure a minimum T score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all the candidates irrespective of the category or the community to which the candidate belongs to, and there is no relaxation in minimum T score. On detailed advertisement notice that you can see on page 24 of 78 details. The candidates equal to 8 times the number of vacancies for station master from each communities and category will be shortlisted based on the CBAT score performance
and only those candidates who have opted for the post of station master. Those also have to produce the vision certificate in the prescribed format as per the annexure 6 in the advertisement provided. In the original during appearing for the CBAT test. Otherwise, the candidates will not be permitted. Candidates will have to qualify in each of the test batteries of the CBAT for considering them to the post of station master. The CBAT shall have questions and answer options only in English and Hindi. There is no negative marking for CBAT. The station master merit list will be drawn only from the amongst candidates qualifying in the CBAT with 70% weightage for the marks obtained in the second stage CBT and 30% weightage for the marks obtained in CBAT. For details about CBAT, candidates are advised to visit the website of the RDSO, rdso.indianrailways.gov.in. There you can navigate the sub-menu directorates, psychotechnical directorate, guidelines for aptitude test for question patterns and other details of CBAT. Typing skill test for the post of senior clerk cum typist, junior account assistant cum typist. Typing skill test is of qualifying nature. Marks obtained in typing skill test shall not be added for making merit. It shall be conducted for which the number of candidates equal to 8 times the number of vacancies for each of the community shall be called for. The candidate should be able to type 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi on personal computer only without editing tools and spell check facility. For guidelines of those who appear for typing skill test in Hindi, Kruti Dev and Mangal font shall be made available for typing skill test on personal computer. Exemption in typing skill test may be extended to candidates who are permanently disabled due to blindness, low vision, cerebral palsy and locomotor disability with not less than 40% permanent disability. Such eligible persons with benchmark disability candidates have to upload a scanned copy of typing skill test exemption certificate issued by the competent medical board in the website of respective regional railway recruitment board before conducting of the typing skill test in the format provided in the annexure 5E. The merit will be drawn only on the candidates qualified in the typing skill test or TST exempted persons with benchmark disability candidates based on the performance in the second stage CBT. Document verification based on the performance of candidates in the examination. Candidates equal to the number of vacancies will be called for the document verification as per their merit and the options provided in the application form. Syllabus for the computer based test, two-stage computer based test is as follows. For mathematics, number system, decimals, fractions, LCM, HCF, ratio and proportions, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, etc. General intelligence and reasoning, analogies, completion of number and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagrams, puzzle, data sufficiency, statement, conclusion, statement, courses of action, decision making, maps, interpretation of graphs, etc. General awareness, current events of national and international importance, games and sports, arts and culture of India, Indian literature, monuments and places of India, general science and life science up to 10th standard CBSE, history of India and freedom struggle, physical, social and economic geography of India and world, Indian polity and governance, constitution and political system, general scientific and technological developments including space and nuclear program of India, United Nations and other important world organizations, environmental issues concerning India and world at large, basics of computers and computer applications, common abbreviations, transport systems in India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organizations of India, etc. Minimum percentage of marks for eligibility in various categories are as follows. For unreserved general category, it is 40%, economically weaker section it is 40%, OBC non-creamy layer 30%, SC 30% and ST 25%.
इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको शेयर किया है। उसके नीचे है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। आपकी जो भी एप्लीकेबल रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड है आपको उसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। SC ST फीमेल्स पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए 250 रुपये। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 13 अक्टूबर 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। वो जल्दी से जल्दी इस अवसर का लाभ उठाकर अप्लाई कर सकते हैं इस रोल के लिए, उनका जो भी मनपसंद रोल है उसके लिए। तो आज का ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।